Please note, these are generalized instructions and the meal plan is also generalized, giving you all the possible options that you can cook for the COVID patient. In case if you have any underlying conditions or any medical parameters that need to be looked into, do take the advice personally from a nutritionist, or with me also you can get in touch, or make sure that you are going and having a word with your doctor before you start with this meal plan. So moving on to how do you start your day with. Okay, first of all, start your day absolutely positive, because COVID is something that we can all fight with. India, luckily, as you know, has the maximum recovery rate, and thanks to our kitchen food, thanks to our herbs that are available and easily usable into our daily routine. So with this note, how do you start your day? Early morning, the best way to start the day for the COVID patients would be to have a glass of lukewarm water with lemon and adrak into it. You can also have 2 garlic pods in the morning, empty stomach. Having 4 to 5 almonds soaked, 2 dates, maybe 1 teaspoon of chia seeds, 1 teaspoon of pumpkin seeds soaked overnight can be beneficial as well. You can incorporate few walnuts into your morning routine. Along with this, you can have 30 ml of Giloy concentrated juice that you get it at any Patanjali store as well, or any other medical stores, with 1 glass of warm water. So that becomes your early morning. Make sure that we will be talking about what are the exercises that you should be ideally doing. We as of now move on entirely with the meal plans. Then it comes to breakfast. Breakfast में हम क्या बनाएं उनके लिए? So बहुत सारे options हैं, जैसे कि आप बेसन का चिल्ला, नाचनी या रागी का चिल्ला, spinach का चिल्ला, vegetable root plus along with roti. You can have parathas. Now vegetable parathas best stuffed with carrot or with doodhi is very beneficial. Even having spinach parathas is also something that you can give to them for their breakfast. Carrot, methi, palak has special importance this way. So these are some of the options. If you're a non-vegetarian, you can have eggs, preferably have boiled eggs. Try to avoid the yolk, because it does have a high amount of cholesterol, and since you are already dealing with a lot of issues regarding the respiratory system, it is best advised to cut out on the yolk. So you can have egg whites along with wheat if you are a non-vegetarian. Also 2 to 3 times out of 15 days, 14-15 days, you can have anything which is fermented, जैसे idli, dosa, dhokla, all these kind. ओट्स ले सकते हैं, वेजिटेबल सैंडविचेस ले सकते हैं, आप पोहा ऐड कर सकते हैं. अगर आप पोहा ले रहे हैं उसमें पीनट्स ऐड करना मत भूलना. नाचनी का डोसा आप बना सकते हैं. इस तरीके से बहुत सारे ऐसे मील ऑप्शंस हैं, उनमें से कुछ मैंने आपको मेंशन किए हैं. ये सारी चीजें आप उनको ब्रेकफास्ट में दे सकते हैं. और इसके साथ में 1 ग्लास ऑफ इम्यूनिटी काढ़ा, विच इज तुलसी लीव्स, लवंग, दालचीनी, क्लव्स, black pepper, ginger and munakka, black munakka you can add, or you can add elaichi also for that matter. साथ में I would also recommend, if you are able to get the likori root, that is the muleti powder, you can add it into your kara. All you need to do is just boil this and strain it and keep. Make sure you are having it at least 1 to 2 cups a day. So this works out for your breakfast perfectly fine. Then we move on to the mid-morning. So mid-morning, as we know, vitamin C is very essential. नींबू पानी अगर आप ले रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा जिंजर ग्रेट कीजिए. That will be adding on to the benefits. Also, you can have 30 ml of आंवला concentrated, which is without sugar. काफी सारी कंपनीज का आता है आंवला जूस कॉन्सेंट्रेटेड, या आंवला पाउडर भी आप कंज्यूम कर सकते हैं इस टाइम पे. So you can have it with 1 glass of warm water. Along with this, you can have any fruit. At this time, you can have something like a red smoothie or a green smoothie, vegetable juice, or a red smoothie is something which is adding on to amaranth. It is adding on to pomegranate, adding some seeds to it. See, all the foods that I have mentioned to you, आप YouTube कीजिए, आपको सारी recipes मिल जाएंगी. मैं to make this, okay?
Then we move on to so in the mid morning time you can have something which is very less in quantity but more in the quality. This is the time you should be stuffing your system with a good boosting up of your antioxidants. Okay, then lunch में आप सबसे पहले उनको एक कटोरी सैलेड दीजिए जिसमें आप स्प्राउट्स, पीनट्स, फ्लैक्स सीड्स, तिल, राजमा, छोले या दैट इज चिकपीस या स्वीट कॉर्न, इस तरीके की चीजें आप उसमें ऐड कर सकते हैं तो उसका प्रोटीन वैल्यू बढ़ जाएगा. सो हैव 1 कटोरी ऑफ सैलेड दे दीजिए. उसके बाद आप उनको सैलेड में कैरेट और कुकुम्बर इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो जरूर ऐड करना. उसके अलावा जो भी चीजें आप ऐड कर सको, just give 1 katori of salad. You can give them either chapati, which is wheat, jawar, bajra, nachni, or you can give them rice, which is white rice or brown rice, whatever you generally consume in the house on a daily scale. Rice में pudina rice is something which is beneficial. Lemon rice, curd rice, spinach rice. आप अगर पुलाव बना रहे हैं तो आप उसमें सोया चंक्स डाल सकते हैं, टोफू डाल सकते हैं, पनीर डाल सकते हैं, अगेन उसका प्रोटीन कंटेंट इम्प्रोवाइज करने के लिए. ओके, दही का होना बहुत जरूरी है लंच में. इट्स अ प्रोबायोटिक, सो यू कैन हैव इट इन द फॉर्म ऑफ छाछ, या आप रायता बना सकते हैं वेजिटेबल्स को मिक्स करके. कभी आप यू कैन कंज्यूम इट इन वेरियस वेज. जैसे मैंने बताया, कर्ड राइस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शन. ओके, यू मस्ट मेक श्योर दैट देयर इज 1 कटोरी ऑफ दाल. कभी अगर नहीं हो सका तो आप ऐसी कोई चीज बनाइए, जैसे समझिए आपने चपाती बनाई है, आप उसके साथ दाल पालक बना दीजिए, तो वेजिटेबल भी हो गया, दाल भी हो गया. इसी तरह से धान शाक, विच इज itself which is a combination of dals and a combination of vegetables. I have shown it in my recipes. You can check out my YouTube video for that. So you can make dhan shak also. So एक ही मील में जितनी मैक्सिमम चीजें हम डाल सके हम उसे इनकॉर्पोरेट करें, ताकि आपके लिए भी कुकिंग इजी हो और खाने वाला भी इंजॉय करें. ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो कोविड पेशेंट्स हैं वो जरूर बीमार हैं, लेकिन एक्चुअली वो इतने ज्यादा बीमार नहीं है कि आप उनको एकदम बोरिंग और ब्लैंड फूड दें. ठीक है, उनको 14 दिन अकेले निकालना है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. फूड के साथ हमारे इमोशंस भी जुड़े हुए होते हैं. सो बहुत जरूरी कि आप उनको अच्छा डिलिशियस फूड बना के दीजिए, कीपिंग ऑल द पैरामीटर्स इन टू माइंड. एंड टेस्टी फूड कैन बी हेल्दी टू. ओके, सो डू ट्राई. वी हैव टू मूव ऑन विद द स्नैक. स्नैक में आप 1 कप इम्यूनिटी काढ़ा यू कैन गिव. ग्रीन टी दे सकते हैं, लेमन ग्रास का टी दे सकते हैं. इस समय पे अगर बहुत ड्राउजी लग रहा हो या रिक्वायर्ड हो तो मे बी जस्ट 2 tablespoons of black coffee or black tea is also okay to be consumed at this time. Makhani chaat. Makhani is a very rich source of magnesium. So makhani chaat, chana chaat, sprout chaat, moong dal ki idli, moong dal ka dhokla, moong dal ke chillas, all these kind of things you can. Peanut chaat, besan ka chillas, paneer toast, रागी बेसन, राजगिरे के लड्डू या उनकी पिन्नी बना के आप रख सकते हैं. थ्रेप्टिन बिस्किट्स आप दे सकते हैं. तो स्नैक इज अ टाइम व्हेन यू कैन एक्सप्लोर ऑन हैविंग समथिंग व्हिच इज वेरी easy to be consumed. Okay, dinner time we move on with having a bowl of soup. Now in this soup, 2 very important ingredients. One is adding of drumstick. If you do not have drumstick, then you can add some moringa powder to it. Add garlic again, which is very beneficial, and ginger. ये 3 elements definitely आप अपने सूप में डालें. इसके अलावा tomato, spinach, carrot, beetroot, whatever vegetables are available, whatever way you want to make your soup, you can have them. Avoid putting any kind of maida or corn flour to your soups. Keep it clear and easy. For non-vegetarians, you can have chicken paya soup. It is a very rich source of protein. For those who do not intend to enjoy the soups, you can even have दाल का पानी, जैसे मूंग दाल का पानी आप बना सकते हैं. बहुत सिंपल और इजी होता है. ठीक है. For the dinner time, again you can have any options that I have already mentioned in the lunch, or it could be going as light with khichdi, curry, dalia, or just having a vegetable along with roti. If you're having jawar rotis, then you have it along with a dudi or a turai or a water-based vegetable.
If you're having a bajra roti, then you need to have it along with a green leafy vegetable and some amount of jaggery along with it. देखिए हमारे पहले के जो लोग होते थे उनके अगर आप मील में देखेंगे तो हमेशा बाजरा की रोटी के साथ वो जैगरी कंज्यूम करते थे या ग्रीन लीफी वेजिटेबल वाज अ पार्ट ऑफ देयर मील. यू नो व्हाई? सिंपली बिकॉज उसका एब्जॉर्प्शन लेवल, बाजरा का एब्जॉर्प्शन लेवल, उसके अंदर से आने वाले जिंक का एब्जॉर्प्शन लेवल इम्प्रूव हो जाता है अगर आप उसमें कोई आयरन सोर्स ऐड कर देते हैं. सो जो भी लोग हमारे पहले की पद्धति थी खाने की, उसका अपना एक इम्पोर्टेंस है और उसका एक अपना मैजिक है. ठीक है, सो इस मैजिक को कंटिन्यूड रखिए. ईट वॉट इज जनरली दैट यू आर कंज्यूमिंग इन योर डेली रूटीन, but try to add some things to your cooking plan which makes it little more nutritious and a little more healthier, and especially for fighting this condition. Bedtime, you must make sure that you're consuming 1 cup of haldi milk which has haldi, soont, ajwain. You can add 1 or 2 strands of kesar to it, elaichi. All this can be added, even dalchini for that matter, but not more than 1.5 teaspoon that you should be adding. So just boil all of this. You can add little dry fruits if required and have it, sip it nicely with 1 cup in the dinner time, post dinner, the bedtime. Okay. So yesterday I came across a video जो किरण बेदी जी ने शेयर किया था, and very beautifully she has expressed her thoughts on COVID. She says that COVID is an attitude. Instead of thinking what we cannot do with what we do not have, we need to think what we can do with whatever we have. And this is something which is so important at this time. So जो भी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है, हम ऐसी क्या चीज़ें करें जिससे कि हम इससे बाहर निकल सके, उसके ऊपर फोकस करना, उस चीज़ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. देखिए ये होने के लिए तो किसी को भी हो सकता है. इट इज़ बियॉन्ड योर एज, योर आप जो भी कम्युनिटी के हैं या किसी भी कास्ट, रिलीजन, क्रीड, कोई भी कम्युनिटी, कोई भी पर्सन हो, ये किसी को भी हो सकता है, किसी के भी हाथ में नहीं है. लेकिन अगर ये हो जाता है तो इसको हम कैसे डील करें, इससे हम कैसे फाइट करें, हमारी इम्यून सिस्टम को बढ़ाए रखें, क्या चीज़ें हम डेली में खाएं, अगर हम क्वारंटीन है तो हमें उस वक्त कैसे खाना है, हमारा दिनचर्या कैसे होना चाहिए, ये सब चीज़ों पे अगर आप ध्यान देंगे, आई बेट you will have no need to go to the rush to the hospital. You can definitely take care of it in a much easier and a better way staying at home. So that's why you need to stay home, you need to stay safe. Okay, so it's also about not only about the diet that we are consuming, but also during this quarantine time, how are you spending every minute of yours is very important. First and foremost, I will tell you, please cut down on your screen time. It is very important. Whether you are watching television or you're watching a lot of news, whatever could it be, you can limit it to a certain hour, maybe a half an hour in the morning or maybe a half an hour in the night, and that should be enough. Do not stuff yourself with too much of negativity, too much of watching all these kind of news. So you can alternate it with dancing, you can alternate it with listening to music. Music will also help the brain balance, that will help and increase your healing faster. As we all know, sleeping is very important. So 7 to 8 hours of sleeping, 3 to 3.5 liters of water, and throughout the time, make sure you are consuming only warm water. जितना हो सके उतना गर्म पानी, जहाँ जहाँ पॉसिबल हो वहाँ आप उसमें थोड़ा नींबू स्क्वीज करके पीजिए. दिस विल रियली बूस्ट अप योर इम्यून लेवल and it will fight the virus really well. Okay. Apart from that, taking steam, inhaling steam is also very beneficial. मैं पर्सनली रेकमेंड करती हूँ कि आप जब पानी उबाल रहे हैं स्टीम के लिए, उसमें आप अजवाइन डाल दीजिए और फिर आप पानी को उबालिए, उसका स्टीम आप लीजिए. दैट विल गिव यू मोर बेनिफिट्स rather than just taking the plain water steam. So ajwain water steam is beneficial. Bhastrika pranayam, that is something which is very, very important. You can check it out in the videos and all, how to do Bhastrika pranayam. ये कंपल्सरीली कीजिए, बहुत एसेंशियल है आपके लंग्स को ओपन अप करने के लिए, आपके रेस्पिरेटरी कैपेसिटी को इम्प्रोवाइज करने के लिए, एंड इट हैज इट्स ओन बेनिफिट्स. सो भस्त्रिका प्राणायाम, डूइंग कपालभाति प्राणायाम, ब्राह्मी प्राणायाम, all these pranayams really are very, very powerful. Okay, apart from that, you can do some asanas, yogasanas,
like Bhujangasan or doing Naukasan, whatever kind of asanas that you know of. अगर कुछ नहीं आता तो सूर्य नमस्कार कर लीजिए, उसमें सारे आसन आ जाते हैं और वो आपके इम्यून सिस्टम को, आपके हेल्थ को बेटर करता है. ठीक है. सो मेक श्योर दैट यू आर डूइंग सूर्य नमस्कार along with your exercises. Now 20 minutes meditation is compulsory. I have been talking about this, not just balancing on the Madhya Pradesh, but maintaining on the Uttar Pradesh. That is your head, your mind. Having a good mindset is something that will really make you cross through this time very easily. So meditation is the key to your locked mindset. Okay, use the key. 20 minutes a day meditation should be a must. That can help you to stay positive as well. All right, increase talk to people who are positive in your surrounding, rather than complaining about things कि यार ऐसा हो गया ना वैसा हो गया. I feel complain को आप थोड़ा सा convert कर दो और ये टाइम को आप रिवाइटलाइज करो, अपने आप को रिवाइव करो, अपने आप को इस टाइम का पूरा सदुपयोग करो. इट्स वेरी वेरी बेनिफिशियल. ओके, सो हैव फेथ, follow this diet for 15 days along with all the essentials that the doctor has prescribed, along with keeping everything into mind. Take proper medications on time, sleep well, be positive, stay happy, because this is the actual dawai as of now to deal with COVID-19. Inspiration to make this video was few of my clients and few of my known people have been affected with COVID, and it was really disheartening for me. So I was really thinking कि अगर मैं as a nutritionist कुछ भी contribute कर सकूं और आप सबके लिए beneficial हो तो वो मुझे करना चाहिए. तो जैसे मैंने अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूँ, आप सब भी अपनी जिम्मेदारियाँ अच्छे से निभाइए. घर पे रहिए, सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, पॉजिटिव रहिए, सब ठीक हो जाएगा. इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. इट विल ऑल पास अवे. ओके, wish you all the best with this is Prerna from NutriReach, your nutritionist, signing off. Stay healthy, stay safe. That's my only prayer. God bless you all.